Hi, today I will talk about the Uniform Civil Code, especially what's the point of views of those who are in the favor of the Uniform Civil Code and what's the point of views of those who oppose the Uniform Civil Code. And I will also talk about the Uniform Civil Code of the Goa. So myself Ahmad, and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network. तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में है उनका पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है. अकॉर्डिंग टू देम, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड विल नॉट जस्ट promote equality and the secularism, but it will also promote the general justice and the women empowerment, because when the religious codes are followed with regard to the personal laws and interpersonal relationship, women's right and the gender equality are generally eroded, as the religious codes tends to be very orthodox in nature. तो चलिए हम ये बात करते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोज करते हैं उनका पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है. अकॉर्डिंग टू देम, इंडियन सोसाइटी इज स्टिल नॉट रेडी फॉर सच ट्रांजिशन एंड द स्टेट शुड नॉट attempt to force down the uniform civil code, because as any such forceful attempt could disrupt the social harmony of the country. And Dr. Bhimrao Ambedkar stated that uniform civil code is definitely desirable, but for a moment it should remain voluntary and it should be implemented only when the Indian society is ready for it, and not through a forceful majoritarian imposition by the state. See, there is no doubt that aspiring towards the uniform civil code is an egalitarian objective. See, what is the egalitarian objective? Egalitarian objective is nothing but an objective where everyone should be treated equally. So I was talking about that aspiring towards the uniform civil code is an egalitarian objective, and it is said that uniform civil code is often features of the developed country where the society has moved beyond its religious division, and in diverse country like India where we have multiple faiths, we have multiple religion, we have multiple ethnicity. See, one hand, the Indian constitution has already provided exception for certain states, especially northeastern states such as the Assam, Mizoram, Nagaland, Andhra Pradesh, to protect the distinct regional identities. And on the other hand, Goa happens to be only a state which has uniform civil code in place. So let's talk about the uniform civil code of the Goa. If we talk about the uniform civil code of the Goa, see, this is Portuguese civil code of 1867, and it applies to all those who are domiciled in Goa, irrespective of you are Hindu, you are Muslim, you are Christian. A common civil laws will apply to you if you domicile in Goa. So let's know some criticism of the uniform civil code of the Goa. According to the legal experts, the uniform civil code of the Goa is not a true and the complete uniform civil code, because reason number one, it is alien in the Indian context because it is given by the foreign entity. Point number two, it is still based on the several orthodox religious bases and values, which makes it completely unsuited in the modern context. Example, it allow Hindu men to practice bigamy. So let's know that what is the bigamy. Bigamy means if a wife fails to deliver a child by the age of 25, her husband can does सेकेंड मैरिज. तो चलिए हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि बाइगेमी क्या होता है. आप मान लेते हैं कि एक हिंदू कपल हु डोमिसाइल इन गोवा, मान लेते हैं कि एक हिंदू कपल है जो कि अभी गोवा में रह रहा है, ठीक है. अगर उनकी वाइफ मतलब 25 की एज तक अगर मां नहीं बन पाती है तो उनके हस्बैंड को ये लीगल ऑथराइजेशन होगा कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं. अगर उनकी वाइफ 25 साल की एज तक मां नहीं बन पाती है तो उनके हस्बैंड को लीगल ऑथराइजेशन होगा कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर द वुमेन, अगर वो वुमेन मां नहीं बन पाती है अपने किसी भी हस्बैंड के रीजन की वजह से,
तो वो वाइफ भी दूसरी शादी कर सकती है ना। तो ये वुमेन के लिए है 25 ईयर्स एंड मेन के लिए है 30 ईयर्स। देखिए मैंने जो भी पॉइंट्स अभी जो इन द फेवर ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो कहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नथिंग बट द क्रक्स ऑफ द टॉपिक एंड वी कैन यूज दीज पॉइंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको लिख के भी दिखाऊंगा, जो भी मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी तक जो यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं उसके थ्रू से मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं थ्रू ऑल दीज इंफॉर्मेशन। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द माई टेलीग्राम channel by tapping at the rate of AHUPSC, by the tapping at the rate of AHUPSC, and thanks for watching.